डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को, मेथड्स को हमने आज देखना है। और इसलिए जो है ना, what I was thinking कि rather than to bore you with my lectures, I can rather make it a bit interesting कि मैं आपसे जो है ना सवाल जवाब करूं। मटेरियल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, so let me see which screen is it। आपके साथ ऑलरेडी जो है ना दो डॉक्यूमेंट्स शेयर हो चुके होंगे, स्मॉल ग्रुप की और लार्ज ग्रुप की। शेयर हुई थी ना आपके साथ जी? यस सर, Yes, sir. हम रिसोर्सेज मूडल प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, तो वी एडेड इट देयर एंड इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट्स दैट जितने फैसिलिटेटर्स के 8 सेशन है और एक दो और ने भेज दिए, वो हमने अपलोड कर दिया है। जबरदस्त, वेल डन, ठीक है। तो आपके लिए जो है ना, बट आई वाज थिंकिंग अबाउट दीज फ्यू क्वेश्चंस, प्रोबेबली डॉक्टर लारैब, इफ यू कैन प्लीज रीड दीज क्वेश्चंस फॉर अस। पहले जो है लार्ज ग्रुप के पढ़ लें और फिर स्मॉल ग्रुप के पढ़ लें। जी मैडम, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Large group, what is a large group? Secondly, when to use large group? Third point is, what are the different formats of large group teaching? Fourth point is, what type of instructional methods can be used? Fifth point, what are the tips for conducting effective large group teaching? And sixth is, how to evaluate large group teaching. So small group में है, first, what is the small group? Second, when to use small groups. Third, what are the different formats of small group teaching? Fourth, what type of instructional methods can be used? Fifth, what are the tips for conducting effective small group teaching? And sixth is how to evaluate small group teaching. वेल डन, ठीक है, ज़बरदस्त। सो अब ऐसे करते हैं कि इफ़ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर इट विद यू। इसमें शेयरिंग की ऑप्शन होती है, लेट मी सी इफ दैट्स इनेबल्ड। कभी कभार वो डिसेबल होती है ना शेयरिंग के ऑप्शन कुछ जगहों पर। ओ यस, हियर इट इज़, इट्स इनेबल्ड। चलें, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स आप सब खोलेंगे प्लीज़। इफ़ यू, आपके साथ नीचे जूम में आइकन्स में चैट की आइकन नज़र आ रहा होगा, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सामने जो है टास्क के नाम से एक फ़ाइल नज़र आएगी। उस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, आई एम गोइंग टू गिव यू अराउंड 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स में आई विल डिवाइड यू इन 2 ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप 1 ने जो है लार्ज ग्रुप से रिलेटेड इन सारे सवालों के जवाब टाइप कर लें, इसी टेबल में टाइप कर लें, ठीक है ना। यू कैन मेक इट सिंपल, वन ऑफ यू कैन बी द स्क्राइब, बाकी जो है वो ग्रुप उसमें अपना ऐड कर दीजिए। यू कैन सर्च द इंटरनेट। आपके साथ जो ऑलरेडी बुक शेयर की है, डॉक्टर अक्सर के साथ किताब शेयर की है ना, प्रैक्टिकल गाइड फॉर मेडिकल टीचर। यस सर, वो शेयर्ड है, वो चलो, सर्जिनेट के फोल्डर में डायरेक्ट उसमें डालिए। उसमें ऑलरेडी आपका लार्ज ग्रुप का भी चैप्टर है और स्मॉल ग्रुप का तो मैंने खुद ही शेयर कर लिया था, लेकिन लार्ज ग्रुप के इवन वो जो उसका टिप्स का है ना, हाउ टू इफेक्टिवली, वो भी मैंने गाने के इंस्ट्रक्शंस शेयर कर दिए थे, तो उससे भी आपको टिप्स नजर आ जाएंगी। सो वन ग्रुप वन इज गोइंग टू सर्च फॉर दीज क्वेश्चंस एंड टाइप दीज क्वेश्चंस फॉर अस इन द, या पावर पॉइंट बनाते हैं, विच एवर सूट्स यू। सो ग्रुप 1 ने जो है, और आप आपस में फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं टास्क को, ठीक है, क्वेश्चंस को, कि आप में से एक दो क्वेश्चंस को कर ले, दूसरा एक दो क्वेश्चंस को कर ले, तीसरा इसी तरह से एक दो क्वेश्चंस को सर्च कर ले, ठीक है जी। सेम इज फॉर द ग्रुप टू ने व्हाट इज स्मॉल ग्रुप, when to conduct small group, how to effectively conduct small group, how to evaluate small groups, what are the different instructional designs। तो ये टास्क जो है ग्रुप 2 का भी है। So let me, टास्क क्लियर है सबको? Anyone having any query? डॉक्टर सादिया, No, डॉक्टर sir. सरवत, डॉक्टर जुनैरा, आर यू क्लियर? डॉक्टर खदीजा, चले, जबरदस्त, ठीक है। यू ऑल आर क्लियर, लेट मी सर मेरे साथ चैट बॉक्स पे कुछ शेयर नहीं है, कोई टेबल में बस नहीं है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आपके साथ नहीं शेयर हुआ? नो सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, सो एवरीवन कैन सी देयर एज वेल। एक दफा डाउनलोड कर लें, क्योंकि कुछ लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी थोड़ा सा चेंज है, सीनियर जूनियर लेवल है, तो आप उधर से खोल लें। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अक्सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो आप जो है वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। और आपके लिए कुछ लोग कभी कभार लेट ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उनको चैट बॉक्स में नज़र नहीं आता, मैंने दोबारा आपके लिए शेयर कर दिया है, ठीक है। So I've shared it, reshared it, और डॉक्टर अक्सर ने भी ऑलरेडी आपके लिए चैट बॉक्स में। So let me now divide you in 2 groups and I'll make one person a coordinator for the group as well, ठीक है। So who can coordinate? मेरे ख्याल से डॉक्टर कुरतुलैन
आप काइंडली अगर कोऑर्डिनेट कर लें ग्रुप 1 जी को, सर। ठीक है। सो ठीक है। आपने लार्ज ग्रुप को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, अपने सारे कोलीग्स ठीक को है। आपने वो करना है। और डॉक्टर पाकीज़ा, व्हाट अबाउट योर इंटरनेट, इज इट स्टेबल इनफ? डॉक्टर पाकीज़ा, आप में से किसका इंटरनेट स्टेबल है? डॉक्टर पाकीज़ा, डॉक्टर लारैब, डॉक्टर सरवत, डॉक्टर जुनैरा? जी सर, मेरा स्टेबल है। गुड, जबरदस्त। सो डॉक्टर लारैब, यू कैन देन कोऑर्डिनेट ग्रुप 2, ठीक है। तो वो आपके साथ ओके ऑलरेडी सर। चैप्टर शेयर्ड है, उसी में से ये सवाल हैं सारे, ठीक है ना। आप बस ऐसे कर लें, आपके साथ जो 3-4 कोलीग्स हैं ना, आप जल्दी से क्विकली यू कैन डिवाइड इट, ठीक है। और हर एक जो है उसके अपनी की पॉइंट्स जो है वो लिख सकता है, ज्यादा डिटेल मत लिखें, जस्ट बुलेट पॉइंट्स, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एंड यू हैव, आई थिंक, हाफ आवर शुड बी गुड इनफ, सो वी कैन कम बैक अराउंड, इट्स नाउ राइट नाउ अभी जो है ना 2:45 है, तो 3:15 पर आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। ठीक है। चलिए, आई ठीक ओपन है। अप द रूम्स फॉर यू ऑल। चलिए, आप सबको ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट आ गई होगी, प्लीज यू ऑल कैन ज्वाइन द रूम्स। डॉक्टर खिजर, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ज्वाइन कर लिया है? अनम्यूट कर लें सर, डॉक्टर खिजर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खिजर सर, मैं आपको जो है ना डॉक्टर खिजर सर, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ रूम नंबर 1 में, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है सर। डॉक्टर सादिया, आर यू हेयर विद अस? डॉक्टर सादिया, डॉक्टर हिमायत, डॉक्टर जुनैरा, डॉक्टर खिजर, डॉक्टर खिजर, डॉक्टर जुनैरा, डॉक्टर तलहा, आर यू हेयर विद अस? डॉक्टर तलहा नदीम। और ये ADME एकेडमिक्स, हु इज ADME academics, so I can send you to the room. जी डॉक्टर तलहा, आर यू हेयर विद अस? आपके चले ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। डॉक्टर तलहा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जी डॉक्टर नदीम एंड डॉक्टर तलहा, अगर आप काइंडली कैमराज ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें, सो आई कैन सेंड यू टू योर अप्रोप्रिएट टू योर रूम्स। जी डॉक्टर तलहा, मैंने टास्क दिया हुआ है, एक ग्रुप को लार्ज ग्रुप टीचिंग का टास्क मिला हुआ है, और एक ग्रुप को जो है स्मॉल ग्रुप टीचिंग का टास्क मिला हुआ है, ठीक है। वो ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये टास्क शेयर भी हो चुका है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं आपको जो है आपके रूम में सेंड करता हूँ अमंगस्ट वन ऑफ द रूम्स, ठीक है। तो उस ग्रुप में वो ऑलरेडी एक्टिविटी कर रहे हैं, यू जस्ट ज्वाइन देयर एक्टिविटी, ठीक है। और वो आपको गाइड कर लेंगे, आपके कोलीग्स उस रूम में। चलिए डॉक्टर तलहा, आपको ज्वाइन के वो आ गया होगा, ऑप्शन आ गया होगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। सेम इज डॉक्टर नदीम, आपको मैं जो हूँ सेंड कर रहा हूँ रूम 2 में स्मॉल ग्रुप टीचिंग में, तो आप उसको काइंडली ज्वाइन कर लें। डॉक्टर तलहा, आपके पास ज्वाइन की ऑप्शन आ गई होगी, आप जो है अपने रूम को ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान, आर यू हेयर विद अस? डॉक्टर सलमान, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? डॉक्टर सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जी मैंने सर। एक्टिविटी दी है, एक रूम 1 में जो है वो लार्ज ग्रुप की उसको तैयार कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स को, और ग्रुप 2 जो है वो स्मॉल ग्रुप के टीचिंग मेथड्स को तैयार कर रहे हैं, ठीक है सर। सो व्हाट आई एम मैं गोना देख डू लेता हूँ। कि मैं आपको सेंड कर रहा हूँ रूम नंबर 1 में लार्ज ग्रुप टीचिंग में, ठीक है सर। तो ओके आपने ओके। आप उनकी बस एक्टिविटी में शामिल हो जाए, ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप फाइल में फाइल शेयर हो चुकी है जो जी वो क्वेश्चंस आ थे, गई मुझे। ठीक है सर। तो आप ज्वाइन कर लें सर, आपको मैंने सेंड कर दिया सर ओके रिक्वेस्ट। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैंने ग्रुप एक्टिविटी दी हुई है और 2 ग्रुप्स में ठीक है। डिवाइड किया उसको। एक ग्रुप ने तैयार ठीक है। करना है ग्रुप टीचिंग को, और दूसरे ने प्रिपेयर करना है स्मॉल ग्रुप टीचिंग को। तो एक्टिविटी ठीक से है। रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो चुके हैं। ठीक है, वो मैं मैं ग्रुप में जाके मैं ठीक आपको नहीं, मैं आपको यहाँ पर अभी ऐसे कर रहा हूँ कि आपके पास अभी ठीक ज्वाइन की रिक्वेस्ट आएगी, मैं आपको रूम 2 में स्मॉल ग्रुप टीचिंग में ऐड कर रहा हूँ, तो आप काइंडली ठीक उसको है। ज्वाइन, रिक्वेस्ट आ गई है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट मेरे व्हाट्सएप पे आएगी डॉक्टर उस्मान? नहीं नहीं मैडम, आपको ये जूम में आई है अभी, आप जूम में देखें ना, आप जूम में देखें, आपके पास नीचे आइकन्स आ रहे हैं ना, उसमें ब्रेकआउट रूम का आइकन होगा, उसमें आपके पास ज्वाइन की हाँ जी, रिक्वेस्ट, उसमें उस पर क्लिक ब्रेकआउट कर, रूम में। जी जी, उस पर क्लिक करें तो आपके पास वो आपको सेंड कर देगा, उस पर क्लिक करें, ब्रेकआउट रूम के आइकन पर क्लिक करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आई होप
the time was sufficient enough for you to go through the reading material and you were able to find the relevant text from the book as well as from the plan. Done? Come the task? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Zabardast. Well done. And group 2? Dr. Larab? जी जी सर, हो गया है उनका, बस वो आप आ रही हैं, हो गया हुआ है वैसे, वो एक स्लाइड थोड़ा लेट। लेकिन वो चली कहाँ गई है? आई होप शी इज हियर। आई थिंक वो ब्रेकआउट रूम से निकलते हुए जो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, आई थिंक शी लेफ्ट एट द एंड। ब्रेकआउट रूम खत्म हुआ ना अभी। वो असली रूम से निकल गई हैं। ब्रेक। उन्होंने ब्रेक ले ली है। चले, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रूम 1। पहले देखते हैं डॉक्टर कुरतुलैन एंड ग्रुप 1 में जो हमारे बाकी कुलीग्स हैं ना, जी, डॉक्टर सर। खदीजा, डॉक्टर सारिया, डॉक्टर खिजर, डॉक्टर हिमायत, डॉक्टर नदीम एंड डॉक्टर सलमान। चलिए मैडम, सो आप लीड ले लें डॉक्टर कुरतुलैन एंड फर्स्ट विल गो थ्रू द लार्ज ग्रुप, उनके क्वेश्चंस जो जी। हमने आइडेंटिफाई किए एंड देन विल मूव ऑन टू द स्मॉल ग्रुप। ठीक है? जी 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 सर, ये स्क्रीन शेयर करनी है या वैसे ही डिस्कस करते जाएं? नहीं मैडम, स्क्रीन शेयर करेंगी ना, सुबह हमने पढ़ा था ना, जी जी ठीक है। विजुअल जी जी मैं स्टिमुलस सिर्फ भी देना है। कंफर्म करी थी। जी स्क्रीन शेयर करें ताकि जी जी वी कैन वी आर विद यू। ठीक है जी सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज लार्ज ग्रुप। ये हमारे ग्रुप का कंसेंसस है कि द लार्ज ग्रुप मींस a group or class of large number of people or students involving at least 25 or more participants. However, the size of group can depend on the subject. For example, in medical colleges, large group consists of lecture hall accommodating more than 100 participants. वेल डन। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन टू यूज लार्ज ग्रुप। इस पे ग्रुप का कंसेंसस था कि लार्ज ग्रुप इज ए पैसिव मोड ऑफ लर्निंग। इट इज यूज्ड व्हेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ टॉपिक आर नीडेड टू बी डिलीवर्ड and when in-depth knowledge is needed to be delivered to students, to large number of students. ठीक है, वेल डन। Then what are the different formats of large group teaching? इस पे ग्रुप का कंसेंसस था seminars, lectures, conferences and workshops. क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जांपल है? क्लिनिकल रोजाना कॉन्टेक्स्ट हर में हफ्ते जॉब करते हैं। क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में लेक्चर्स हैं और सेमिनार्स हैं। लार्ज CPC ग्रुप ward teaching, बेडसाइड bedside टीचिंग teaching. ज्यादा सीपीसी आप जो करते हैं, सीपीसी बिल्कुल सर सही कह रहे, सीपीसी था। सीपीसी में पूरे अस्पताल के ट्रेनीज आ जाते हैं ना, जी तो जी लेक्चर के फॉर्मेट में होता है ना। जी जी बिल्कुल सही, क्या बात। सीपीसी। वेल सर बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स कैन बी यूज्ड। अब उसमें हम लोगों का कंसेंसस ये था कि लेक्चर्स को ज्यादा बेटर बनाने के लिए जो तरीके यूज कर सकते हैं, तो फिर हमने इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम असाइनमेंट्स, ऑडियो विजुअल टूल्स, स्पीकर्स एंड माइक इंटरेक्शन, रोल प्लेस, क्लास डिबेट, ऑडियंस रिस्पॉन्स सिस्टम एंड पोलिंग, सिमुलेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन इंक्लूड किया था। वेल डन, एग्जैक्टली। सो यू नो, अब जो मॉडर्न जितने भी हमारे पास लेक्चरिंग की टेक्निक्स है, जिसमें हम कह रहे हैं कि इंटरेक्टिव लेक्चरिंग की तरफ जाएं, स्टूडेंट्स को एक्टिवली इंगेज करें। सो अब जो डिबेट है ना, जो करंट डिबेट है, हम तो अभी तक इसी में फंसे हैं ना, लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप में। जो डिबेट है वो अब लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप की नहीं रही। अब जो डिबेट मेडिकल एजुकेशन में वो है एक्टिव और पैसिव लर्निंग की। इवन एक लार्ज ग्रुप में भी आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा होता है ना कि पैसिव लर्निंग है, लेकिन नहीं, लार्ज ग्रुप में आप एक्टिव लर्निंग की स्ट्रेटेजीज इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताई गई है सारी टेक्निक्स एक्टिव लर्निंग की प्रमोट करने के लिए। और स्मॉल ग्रुप को भी अगर खराब तरीके से प्रिपेयर किया जाए डायडैक्टिक, तो स्मॉल ग्रुप जो कि है तो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो भी पैसिव लर्निंग का सेशन बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल। चलें, शाबाश। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question था what are the tips for conducting effective large group teaching। इसमें ग्रुप का consensus था कि first of all clear learning outcomes and achievable learning outcomes must be made and shared। फिर ideally start with a relevant and interesting problem
incorporate variety of teaching methods, use visual reinforcement and use interactive sessions, promote class participation by asking questions and encouraging students to ask questions, facilitate the session and ensure it runs on time, maintain the flow of content and provision of stimulation material, questioning students to check their understanding, encouraging to ask, providing effective feedback, critical reflection and lesson evaluation at the end of the session. ठीक है, अब ये देखिए, ये सारी बातें जो है ना आप स्मॉल ग्रुप में भी देखेंगे। ये जी बेसिकली आप अगर देखेंगे यही सारी बातें आप लार्ज ग्रुप में भी दोबारा से कर सकते हैं। और अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा जो 1 पेज का फ्लायर था गानी का, इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जी आप वेबसाइट पर भी अगर लार्ज ग्रुप को लेते हैं या उस पे आप या लेक्चर हॉल में भी उसी को यूज कर सकते हैं, तो आप उसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में एग्जैक्टली यही बताया गया ना कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, गेन अटेंशन करें, स्टार्ट विद समथिंग इंटरेस्टिंग, क्लिनिकल प्रॉब्लम जो रेलेवेंट हो। उसके लेट से हम ग्रेड सेफनेस सिस्टम और शॉर्ट सेफनेस सिस्टम पढ़ा रहे हैं एनाटमी में, तो वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट विद वेरिकोज वेन्स कि जी खातून आई है, ठीक है, और वो जो है उसकी कॉस्मेटिक्स वो हैं और वो जो है बड़ी परेशान है कि जी ये जो है मेरी रगें फूल गई हैं, अब मैं क्या करूं। तो अब इस तरह के सिनेरियो को आपने डेवलप कर लिया है और उसके साथ आपने ग्रेड सेफनेस सिस्टम और शॉर्ट एनाटमी को आपने लिंक कर दिया, तो क्लिनिकली कोरिलेट हम कर सकते हैं। एंड देन क्वेश्चनिंग आंसरिंग की जो टेक्निक है, यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। मैं तो यूजुअली अब ये करता हूँ जब लेक्चर देता हूँ, खासकर अंडर ग्रेड्स को ना, वो बेचारे बड़े बोर होते हैं। पोस्ट ग्रेड्स तो सीनियर हो जाते हैं, वो थोड़ी सी उनकी वो ज्यादा होती है, वो अटेंटिव बैठते हैं, लेकिन अंडर ग्रेड्स जो है ना उन बेचारों के रोजाना 5-6 लेक्चर होते हैं, तो वो बड़े तंग हो जाते हैं लेक्चरों से ना, तो उनके लिए तो रूटीन की एक्टिविटी होती है। सो व्हाट आई डू, मैं हर 4-5 स्लाइड के बाद जो है ना, मतलब मैक्सिमम 5 स्लाइड्स के बाद मैं लाजमन जो है ना सवाल जवाब उनसे करता हूँ। और मेरा यूजुअली तरीके ये होते हैं ना कि अक्सर हमारे जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं ना वो एमसीक्यूज को बड़े वो इंटरेस्टिंग फील करते हैं, क्योंकि उनको सारी टेस्टिंग एमसीक्यूज की बुनियाद पर होती है ना। सो व्हाट आई डू, मैं हमेशा जो है ना उनके साथ 2-3 एमसीक्यूज, जो 4-5 स्लाइड पढ़ा देता हूँ उसके बाद 2-3 एमसीक्यूज उनके लिए रख लेता हूँ। तो वो गानी में भी एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है ना कि आप जो है हर चंद स्टेप के बाद जो है ना उसमें फिर दोबारा से उसके लिए सेशन है कि किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है और एंगेज करना है स्टूडेंट। जी लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू इवैल्यूएट लार्ज ग्रुप टीचिंग। सर इसमें ग्रुप का कंसेंसस था कि इसमें स्टूडेंट से भी फीडबैक लेना है और टीचर की इवैल्यूएशन फॉर्म्स भी होते हैं। सो क्रिएट अ रुब्रिक सेट and evaluate standards and share with students to communicate expectations, assess the performance of group and its individual members, give regular feedback to the students and teacher evaluation forms. Well done. ये थोड़ा सा So let's now ask group number 2. जी, ग्रुप नंबर 2 में है डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर लारैब, डॉक्टर सरवत एंड डॉक्टर शाहीन। आपके कोई क्वेश्चंस ग्रुप 1 से? यू मस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस ताकि इनका जो है ना पता चले, और आपको भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं। डॉक्टर कुरतुलैन मैडम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी फाइल जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर लें। जी सर। इधर चैट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकती हैं, आप चैट बॉक्स में शेयर कर लें, ठीक है। यहाँ पर चैट बॉक्स में एक आइकन है ना, जब आप चैट पर क्लिक करती हैं तो नीचे 3-4 आइकन्स हैं, एक फॉर्मेट है, एक स्क्रीनशॉट है और एक फाइल है। ठीक है। तो फाइल पर जब क्लिक करेंगी ना तो आपको योर कंप्यूटर पर ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से भी आप कर सकती हैं इसको शेयर, और आप चैट बॉक्स में भी कर सकती हैं। जी एनी ठीक है। क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप 2? ग्रुप 2 नो क्वेश्चंस? चले, आपने मैडम आप ग्रुप 1 ने लाजवाब कर दिया ग्रुप 2 को। जी सर, हमने इनकी बोलती बंद करा हमने बहुत अच्छा बनाया। चले ठीक है, ओके सर लेट्स नाउ आस्क ग्रुप 2। चले ग्रुप 2 में कौन प्रेजेंट करेगा? हु इज गोइंग टू प्रेजेंट? जी, हु इज गोइंग टू प्रेजेंट? अच्छा, जिस बेचारे को मैं कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, जरूरी नहीं कि वही बेचारा हर जगह फिर फंस जाए, वो प्रेजेंटेशन भी बनाए। उसका मकसद वो जो है सॉर्ट ऑफ लीड करे अपनी टीम को। तो आप जो है ना असाइन भी कर सकती हैं टास्क किसी को। चले अब तो आप कर रही हैं प्रेजेंट, तो चलें प्लीज डॉक्टर लारा कैरी ऑन। आप इसको फुल स्क्रीन कर दें। ये मैडम नीचे जो परसेंटेज की आइकन आ रहा है ना, हाँ इधर से बिल्कुल इसको फुल स्क्रीन कर दें। चले मैडम प्लीज कैरी ऑन। सर हमारा टॉपिक था स्मॉल ग्रुप टीचिंग। सबसे मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं
Dr. Aksa, Dr. Sarwar, Dr. Shaheen, Dr. Pakiza, and Dr. Rehana. फिर सबसे पहले है what is small group? तो sir, it's a method for generating free communication between the group leaders and the members and among all the participants themselves. Next है closely linked होता है, इसमें active learning होती है और सर इसमें 8 to 15 का जो है वो ग्रुप जो प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली एक ग्रुप बनता है. स्टूडेंट सेंटर मेथोडोलॉजी इसमें सर यूज होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व हों. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन टू यूज स्मॉल ग्रुप. तो ये बेसिकली ट्यूटोरियल्स, सेमिनार्स, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के लिए, बेड साइड वार्ड बेस्ड क्लिनिकल टीचिंग. और सर इससे क्या है एकेडमिक अचीवमेंट्स इंप्रूव होती हैं और क्लासमेट्स के रिलेशनशिप आपस में, और ये प्रमोट करता है साइकोलॉजिकल वेलबींग. इसके फॉर्मेट्स हैं हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड लर्निंग एंड टीम बेस्ड लर्निंग. तो इसमें जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यूज होते हैं वो है बेसिकली फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, नॉमिनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंक, पेयर, शेयर, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स, फ्लैश कार्ड्स, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, लर्निंग सेंटर्स, jigsaw and numbered heads together. फिर tips for conducting effective small group teaching इसमें है setting clear goals at the start of the session, facilitating the sessions and ensuring it run on time, maintaining the flow of content, provision of stimulating materials and questions, questioning students to check their understanding, encouraging students to ask questions, providing effective feedback, critical reflection and lesson evaluation at the conclusion of the teaching session. The last question था how to evaluate. तो basically सर इसमें यह है कि formative assessment के through teachers evaluate कर सकते हैं and peer assessment के through students जो हैं वो खुद को भी evaluate कर सकते हैं, उनको opportunities मिलती हैं ग्रुप को, बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी हम कह सकते हैं कि वो evaluate करें in group. थैंक यू ग्रुप 2 एंड डॉक्टर लारब. डॉक्टर लारब ये आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग पर ही रखिएगा, ठीक है? अभी इसको मत करें. कैन यू गो टू द स्लाइड जो कि जिसमें आ रहा था व्हेन टू यूज स्मॉल ग्रुप. हाँ जी, इस वाली स्लाइड में, ठीक है. सो एक जो है इसमें बाकी तो ये देखें वन स्लाइड जो है ना, जो पॉइंट बुलेट पॉइंट 1 है, ये तो एक जर्नल पॉइंट हैज नथिंग टू डू व्हेन टू यूज स्मॉल ग्रुप ना, कि मेडिकल स्कूल में यूज. सेकंड वन जो है ना, सेकंड वन में ठीक है आपने सेटिंग्स बता दी, ट्यूटोरियल में, सेमिनार्स में, पीबीएल में, बेड साइड में, सब जगह स्मॉल ग्रुप यूज होता है. और तीसरा पॉइंट आपने उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि इट इंप्रूव्स एकेडमिक स्कोर्स एंड रिलेशनशिप्स एंड लीडरशिप स्किल्स एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग. और एक जो है इसमें जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना ग्रुप 1 के साथ, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट हम करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट एंगेजमेंट को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट मोटिवेशन पर हम काम करना चाह रहे हैं. तो ये सारे रीजंस हैं स्मॉल के. स्टूडेंट्स को हमने मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स को हमने एंगेज करना है, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करना है, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस अगर करानी है. अच्छा, एक और तरीके से भी, नेक्स्ट स्लाइड पर आप चली जाएं. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 मेथड्स बताए गए हैं. इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? सर जैसे पीयर असिस्टेड लर्निंग अगर ग्रुप्स में करवाएं तो. वेल डन. व्हाट इज पीयर असिस्टेड लर्निंग? So usually your fellow colleague या peer जिसमें जो आपके ग्रुप्स में होते हैं, आप एक दूसरे की इंफॉर्मेशन से फायदा लेते हैं. So you sit in groups and your friends help you. It could be somebody with the same level of knowledge and it also could be somebody with different level of knowledge as well. Well done, exactly. So peer assisted learning को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर खदीजा ने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया, आपको याद है हम हॉस्टल्स में पढ़ते थे, आपस में ग्रुप बना लेते थे क्लास फेलोज, इनफॉर्मल पीयर असिस्टेड लर्निंग ना.
अब तो फॉर्मल की बातें होती हैं हम, लेकिन इनफॉर्मल तो हम सब ने किया ना, अपने रूममेट्स के साथ, अपना हमारा स्टडी ग्रुप होता था या हमारा बैच होता था, उस बैच में हम एक दूसरे से सीखते थे। तो ये क्या है, ये हमारा, इसको नियर पीयर भी कहते हैं या हॉरिजॉन्टल पीयर असिस्टेड लर्निंग भी कहते हैं, और एक को कहते हैं वर्टिकल पीयर असिस्टेड लर्निंग। लेट्स से हम थर्ड ईयर में थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट से हम सीख रहे होते थे, वो हमें पढ़ा रहे होते थे, या फाइनल ईयर में होते थे हाउस ऑफिसर्स हमें, जो हमसे एक साल सीनियर होते थे ना, तो वो हमें पढ़ा रहे होते थे। तो ये क्या है, इसको वर्टिकल पीयर असिस्टेड लर्निंग भी कहते हैं, कि आपका मतलब सीनियर स्टूडेंट है जो कि आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सर ये जी फरमाइए। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये टीम बेस्ड लर्निंग के अंडर ही नहीं आ जाता पीयर असिस्टेड लर्निंग? वेल डन, आते हैं अब इसकी तरफ। तो ये हो गया पीयर असिस्टेड लर्निंग। हमने जो किया ना, हमने इनफॉर्मल पीयर असिस्टेड लर्निंग किया था, अब फॉर्मल पीयर असिस्टेड लर्निंग आजकल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से अब 3-4-5 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें फॉर्मली पीयर असिस्टेड लर्निंग को किया जाता है, जिसमें बाकायदा कॉलेज की तरफ से पूरा एक प्लान दिया जाता है पीयर असिस्टेड लर्निंग का, बाकायदा टीचिंग सेशंस होते हैं उसके, जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं। फैकल्टी मेंबर सिर्फ वहां पर इसलिए इंश्योर करता है कि भाई ये डिसिप्लिन में रहें और अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, अच्छा अब आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के लिए। ये जो है ना सारी एवोल्यूशन आपको नजर आ रही है, ये जो 3 आपको टीचिंग मेथड्स नजर आ रहे हैं ना सामने स्मॉल ग्रुप के, 1965 में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आया था मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से, कनाडा से। ठीक है, और उसकी पीछे साइकोलॉजी क्या थी, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी? रीजन ये था कि हम सब तो बेसिक साइंसेस पढ़ाते और एक बहुत बड़ा डिवाइड आ गया था बेसिक साइंसेस का और क्लिनिकल साइंसेस का। जबकि डिबेट यही कि जी पेशेंट तो हमेशा एज अ प्रॉब्लम आता है, पेशेंट तो ओपीडी में इमरजेंसी में आता है, वो क्या कहते हैं जी डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, अब दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया कि भाई आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन द मेडिकल कॉलेज आप ऐसे ही पढ़ाएं जैसे कि प्रॉब्लम पढ़ाते हैं। पेट में दर्द है तो सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो है ना उस पेशेंट की सिम्टम से लिंक। तो इस तरह से आपने अपने आइडेंटिफाई कर लिए 140 या 180 सिम्टम्स जो कि आप फेस करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे खांसी है, डॉक्टर साहब मेरे दिल में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द हो रहा है, ठीक है जी, डॉक्टर साहब मुझे जो है ना नजर सही तरह से नहीं आ रहा। अब ये जो है ना ये सारी आपकी सिम्टम्स आ गई ना। अब इन सिम्टम्स की बुनियाद पर आप पूरा करिकुलम डिजाइन करें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंशन। ठीक है जी, ट्रॉमा आ गया तो बाइक की इंजरी आई है तो हेलमेट का क्या फायदा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये सारी चीजें आप लेकर आ जाएं, जो जो चीजें आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम बेस्ड का, और इसमें स्टूडेंट्स खुद ही तैयारी करते हैं, दे आर जस्ट गिवन द प्रॉब्लम, उनको एक सिनेरियो दे दिया जाता है। जैसे भी मैंने कहा ना कि वेरिकोज और वो एक खातून आ गया और उसका जो है ना कॉस्मेटिक रीजंस हैं, और वो कहती कि जी मेरे जो है ना मुझे पाँव छुपाने पड़ते हैं और मेरी बड़ी ये वो बाकी आगे उसके वो भी हो गए हैं, ठीक है जी, अल्सर्स वगैरह उसके बन रहे हैं। तो ये जो है आपने उसको सिनेरियो दे दिया, और स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स खुद ही एनाटॉमी पढ़ेंगे, ग्रेट सेफनेस सिस्टम, शॉर्ट सेफनेस सिस्टम, परफोरेटर्स, ये सारी चीजें, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड ये सारी चीजें स्टूडेंट्स सब पढ़ेंगे। तो 1980s में फिर कॉन्सेप्ट आया केस बेस्ड लर्निंग का, और उसकी वजह ये थी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में आपने सुबह थ्योरीज पढ़ी थी ना, तो जो कॉग्निटिविस्ट थ्योरिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जी ये पीबीएल तो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि बेचारे स्टूडेंट्स जो है ना, जिन कॉलेजेस में पीबीएल अभी भी होता है पाकिस्तान में, स्टूडेंट्स बड़े स्ट्रेस में होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत तंग होते हैं पीबीएल सेशन से। तो उसमें सीबीएल का कॉन्सेप्ट आया कि केस बेस्ड लर्निंग विल बी मोर पार्टिसिपेटरी, इसमें अब फैकल्टी मेंबर भी उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। पीबीएल में फैकल्टी मेंबर इंटरेक्ट नहीं करता, वो बस सिर्फ सवाल पूछता है। ठीक है, जैसे अब मेरा और आपका ये जो सेशन है ना, दिस सेशन इज मोर ऑफ आप कह सकते हैं सीबीएल के फॉर्मेट में, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ इस पे छोड़ देता कि आप खुद ही करें सब कुछ और मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, दैट वुड हैड बीन मोर ऑफ अ पीबीएल सेशन। लेकिन आप स्ट्रेस में होते, आपको आपके सवालों के जवाब ना मिलते। अभी देखें आप लोगों ने तैयारी की अपनी, लेकिन तैयारी के साथ अब मैं क्या करूं, मैं जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं ओवर एंड अबव, मैं उनके साथ आपके लिए एक्सप्लेनेशंस भी दे रहा हूं। तो ये अब दिस इज मोर ऑफ पार्टिसिपेटरी, लेकिन फिर भी मेरा रोल निस्बतन इसमें सेशन में कम था। सो इट वाजंट मोर ऑफ लाइक अ लेक्चर, जैसे सुबह का मेरा सेशन था ना, दैट वाज मोर ऑफ अ लेक्चर। ठीक है जी, अब ये वाला जो है ना, दिस इज मोर ऑफ अ इंटरेक्टिव सेशन। फिर उसके बाद आया टीम बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेट 90s में। टीम बेस्ड लर्निंग में असल में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और केस बेस्ड लर्निंग की दोनों की खसूसियात है, लेकिन इसमें साथ में अकाउंटिंग। फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट का नाम शायद आपने सुना होगा। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पहले से ही रीडिंग मटेरियल दे दो,
जैसे मैंने यूज किया ना, मैंने डॉक्टर अक्सा को 2 दिन पहले ही आपका सारा रीडिंग मटेरियल सेंड कर दिया और उनको कह दिया कि प्री रीड है, सारे पार्टिसिपेंट से करें, सारे फेलो से कहें कि जी इसको जो है पढ़ें आप लोग, ठीक है जी। तो दिस वाज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टीम बेस्ड लर्निंग, ठीक है। फिर इसमें खैर टेस्टिंग का एलिमेंट होता है, मैंने खैर उसको अप्लाई नहीं किया, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। तो लेकिन ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके कॉलेज की सेटिंग्स में ये फॉर्मल टीचिंग सेशंस यूज होते हैं स्मॉल ग्रुप, जबकि स्मॉल ग्रुप तो आप हॉस्पिटल में भी करते हैं। क्या आप ओपीडी में नहीं करते? जो बैचेस में स्टूडेंट्स आते हैं, बेड साइड पर स्टूडेंट्स आते हैं, चेयर साइड पर स्टूडेंट्स आते हैं, वार्ड राउंड्स में आपके पास 8-10 के बैचेस आते हैं, तो स्मॉल ग्रुप तो वहां पर भी होता है ना, ठीक है। तो सिर्फ इस पर मत वो महदूद रहिएगा कि शायद स्मॉल ग्रुप ये कॉलेज की सेटिंग में होता है। स्मॉल ग्रुप में यहाँ पर जो पॉइंट असल में क्लैरिफाई करना चाह रहा था वो ये था कि स्मॉल ग्रुप जो है वो तो हॉस्पिटल सेटिंग में भी होता है, ठीक है ना, समझ गए। हम जब अस्पताल जाते थे तो अस्पताल में हमारे स्मॉल ग्रुप्स बनते थे ना, 8-10 का बैच होता था ना, ठीक है। अच्छा जी, चलें आगे चलें जी मैडम, डॉक्टर लारे प्लीज आगे चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अच्छा, ये माशाल्लाह से इन्होंने बड़ा जबरदस्त वो इंस्ट्रूमेंट वो दिए, थिंक पेयर शेयर, और ये सारी चीजें पता है किसी को इसमें से कोई चीज जो आपको समझ ना आ रही हो, ये जिगसॉ जो है ये तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे भी नहीं पता, और ये नंबर्ड हेड्स टुगेदर प्रोबेबली, लेकिन बाकी जो है वो मेरे ख्याल से मैंने की है। आई मीन देयर कैन बी मेनी मोर एज वेल। थिंक पेयर शेयर में ये होता है ना, आप सब लेट्स से मैं बना लेता हूँ डॉक्टर खदीजा का और डॉक्टर कुरतलैन का मैं पेयर बना लेता हूँ, डॉक्टर लारैब का और डॉक्टर अक्सा का पेयर बना लेता हूँ, डॉक्टर सारिया और डॉक्टर पाकीज़ा का पेयर बना लेता हूँ, ठीक है जी, डॉक्टर सरवत को डॉक्टर हिमायत के साथ पेयर बना लेता हूँ। इसी तरह से जो है तो आप जो है क्या कर लेंगे, अब आपने पेयर्स बना लिए हैं और इन पेयर्स को आपने जो है क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से मैंने आप सबको सवाल दे दिया कि प्लीज राइट डाउन द स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड इन द ओपीडी सेटिंग, ठीक है। ओपीडी सेटिंग में अब आप सबने क्या किया, आप सबने इस पर सोचा, फिर आप सबका पेयर बना और आप सबने फिर आपस में शेयर किया। तो डॉक्टर खदीजा और डॉक्टर कुरतलैन ने फिर आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया कि भाई व्हाट हैव वी फाउंड अबाउट इट, ठीक है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कि 2-2 के आप ग्रुप्स बना लें। अब जारी बात है लेक्चर हॉल में तो आप 2-2 के ग्रुप्स नहीं बना सकते, लेकिन स्मॉल ग्रुप में तो आपके साथ 8-10 स्टूडेंट्स होते हैं ना, या 12 स्टूडेंट्स होंगे, तो उनमें आप फिर 2-2 के पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स में आप जाहिर बात है उनको कार्ड्स दिखाते हैं और उन कार्ड्स पर जो है वो क्वेश्चंस उनके होते हैं। इस तरह से बाकियों को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो बाकी ग्रुप्स मेथड्स हैं इसमें उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर लारैब। अच्छा, ये तो माशाल्लाह से वही सेम जो ग्राउंड रूल्स इन्होंने वो बताए हुए थे, दिस इज मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम एज द प्रीवियस वन। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्लाइड? सर इस स्लाइड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब हम टास्क कर रहे थे तो एक स्लाइड सी हमें कंफ्यूजन थी कि जैसे आपने पूछा फॉर्मेट्स ऑफ लार्ज ग्रुप टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। अब फॉर्मेट्स में तो समझ आती है कि हम लेक्चर एक्सपेक्ट करें या हम कॉन्फ्रेंसेस एक्सपेक्ट करें, वो एक फॉर्मेट है ऑफ लार्ज ग्रुप टीचिंग। लेकिन इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज जो है ना वो व्हाट टूल्स टू यूज फॉर एक्टिव लर्निंग के साथ बहुत ओवरलैप करती हैं। तो मैं नोट करी थी कि स्मॉल ग्रुप टीचिंग और लार्ज ग्रुप टीचिंग दोनों के अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज हैं जो ओवरलैप करती हैं, और लार्ज ग्रुप के अंदर भी कभी कभी हम उनको स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके बहुत सी स्मॉल ग्रुप की एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स भी यूज कर रहे होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बस ये था कि जब कोई इस तरह से स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज पूछता है लार्ज ग्रुप की, और उसमें आप थोड़ी सी स्मॉल ग्रुप वाली इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, क्योंकि वो है तो एक्टिव लर्निंग वाली जो आप लार्ज ग्रुप में भी करना चाहेंगे, सो दैट लार्ज ग्रुप वाली भी थोड़ी सी एक्टिव और इंटरैक्टिव हो जाए, तो कोई मसला तो नहीं होता है इसमें? मतलब इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है? देखें, मकसद है स्टूडेंट को एंगेज करना। ऑडियो विजुअल आप जो है मल्टीमीडिया आप स्मॉल ग्रुप रूम में भी यूज करते हैं, लार्ज ग्रुप में भी यूज करते हैं, दोनों ही जो है आपको हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को एंगेज करने में, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल दोनों पर आ जाएगा। स्टोरी टेलिंग की एक्सरसाइज है। स्टोरी टेलिंग, आपने एक पेशेंट की स्टोरी डेवलप की ना, पूरी पेशेंट की, हर पेशेंट की फाइल जो है ना वो एक स्टोरी है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार स्टोरी टेलिंग कैसे करें, मैं कहता हूँ यार गायनी से 10 फाइलें ले लो, मेडिसिन से 10 फाइलें ले लो, पीठ से वो फाइल शुरू से उसकी हिस्ट्री से लेकर उसके डिस्चार्ज तक वो सारी कहानी है उस पेशेंट,
क्या क्या उसके ऊपर गुजरा। उसको आप सोशल एस्पेक्ट से भी देख सकते हो, उसको आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, उसको आप कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, उसकी कहानी को आप हार्डकोर मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, उसकी ट्रीटमेंट, क्लिनिकल रीजनिंग, इन्वेस्टिगेशंस। तो अब देखें ये आप लार्ज ग्रुप में भी यूज करें या आप स्मॉल ग्रुप में भी यूज करें, ठीक है ना, स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी। तो अच्छा, एक और यहाँ पर इससे जो मैडम ने बात की ना डॉक्टर हबीब, टीम बेस्ड लर्निंग हमने यहाँ पर स्मॉल ग्रुप में लिखा हुआ है। टीम बेस्ड लर्निंग तो असल में लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड है, वो तो क्लासरूम में करते हैं, मैं तो 250 स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ। वो जैसे आपने कहा ना कि टीम बेस्ड लर्निंग, तो असल में उसका एक और फायदा मैं सॉरी बताना भूल गया था, वो ये था कि केस बेस्ड लर्निंग और पीबीएल में 10-10 कमरे चाहिए होते थे, 10-10 ग्रुप्स बनते थे 100 स्टूडेंट्स, फिर 10 फैसिलिटेटर चाहिए होते थे कि वो उनको पढ़ाएं, पर उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ा कि भाई सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ा रहे हैं तो सबके सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही एक लेवल पर पढ़ाएं। तो ये बड़ा मसला हो गया था कि भाई इतने कमरे नहीं है। अब किंग एडवर्ड है, खैबर मेडिकल कॉलेज है, ये डाउ मेडिकल कॉलेज, पुराने कॉलेजेस हैं, इनमें कहाँ प्रोविजन थी 70 साल पहले, 100 साल, 200 साल पहले, किनमें स्मॉल ग्रुप के लिए रूम्स होते हैं, और ये जगह भी तंग हो गई अब। तो टीम बेस्ड लर्निंग की जो टेक्निक है ये असल में लार्ज ग्रुप की टेक्निक, लेकिन उसके अंदर आप फिर 250 की क्लास में आप फिर फर्दर 7 स्टूडेंट्स के 6 to 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर दोबारा से वो स्मॉल ग्रुप की टीचिंग के मेथड्स आ जाते हैं विद इन द लार्ज क्लासरूम। तो मैं अक्सर जो हमारे खैबर मेडिकल कॉलेज है ना, अयूब मेडिकल कॉलेज, जो बड़े कॉलेज 275 वाले हैं, तो उन बेचारों के पास तो प्रोविजन ही नहीं है स्मॉल ग्रुप रूम्स की। नए कॉलेजेस में तो है, उनमें तो नहीं है। तो उनको मैं कहता हूँ कि भाई, बल्कि मैं तो अब सबको ये कहता हूँ, सवात भी मैं जाता हूँ हर जगह, मैं कहता हूँ यार टीम बेस्ड लर्निंग को इस्तेमाल करो, क्योंकि हर जगह फैकल्टी के भी इशूज हैं, इतने फैकल्टी, फिर डेमोन्स्ट्रेटर की लॉट भी आ जा रही होती है। तो मैंने भी अब अपने सारे सेशंस जो है ना वो टीबीएल में कन्वर्ट कर दिए, टीम बेस्ड लर्निंग। वो इंशाल्लाह हम करेंगे आपके साथ डिटेल में टीम बेस्ड लर्निंग, जब आपके अभी तो 2 साल है ना, तो आपका जो सेशन आएगा ना टीबीएल का, उसमें फिर हम डिटेल में उसकी निटी ग्रिटी डिटेल्स करेंगे, बल्कि आपको वो कराएंगी टीबीएल के स्टाइल में। आपको वो पूरा जो 2 घंटे का सेशन होगा ना, वो हो गई टीबीएल के स्टाइल में, ताकि आप जो है टीबीएल को प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लें। तो अब ये जो आपने बात की, तो इसलिए इसमें ओवरलैप्स आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। आप थिंक पेयर शेयर की भी टेक्निक यूज कर सकते हैं लार्ज ग्रुप में, जो आपने स्मॉल ग्रुप में यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि भाई देखो इसमें काफी, असल में मैंने बात क्या की थी, बात मैंने जो शुरू में आपको कही थी उसी की तरफ जा रही है कि बात अभी खत्म हो गई लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप, अब बात है एक्टिव और पैसिव लर्निंग की। आप ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं ना, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, भले से वो लार्ज ग्रुप में हो या स्मॉल ग्रुप में हो। हम अब लार्ज ग्रुप में भी कोशिश कर रहे हैं विद न्यू एजुकेशनल इंटरवेंशंस एंड न्यू टेक्निक्स कि किस तरह से अब हम लार्ज ग्रुप में भी एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं यूजिंग टीम बेस्ड लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है। अच्छा, एवेल्युएशन में तो मेरे ख्याल से वही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एवेल्युएशन दोनों आ जाते हैं ना। आप सर्वे दे सकते हैं, फीडबैक करवा सकते हैं, इंटरव्यूज भी कर सकते हैं उनसे जो है फोकस ग्रुप्स भी उनके साथ करवा सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी, फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी। सो दोनों वही जो एवेल्युएशन के, तो वही जो रिसर्च के क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तरीके, उन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलें, सो आई थिंक दैट्स, कोई और इसमें कोई सवाल किसी का, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट इज स्टिल नॉट क्लियर? जी, किसी का कोई सवाल? डॉक्टर नदीम सर, आपको क्लियर हो गया? चलें, जबरदस्त, ओके। सो माशाल्लाह से आप सब जो थे परेशान थे कि मैं आपकी ब्रेक खा जाऊंगा, जी और सर, मैंने आपको ब्रेक के बजाय जो है ना 15 मिनट और भी बचा कर दे दिए। थैंक यू सर। देखिए ये एक्टिव लर्निंग सर का ये हम आपके लिए बहुत दुआ करेंगे, आपको बेहतरीन फीडबैक देंगे। बेहतरीन फीडबैक नहीं, मेरी शिकायतें लगाएंगे कि यार ये देखो भाग जाता है सेशन से, आधे में छोड़ के चला नहीं जाता नहीं सर, हम ये वाला सेशन हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है, आप कोई भी हमारी असेसमेंट कर ले। है। अच्छा चले, ठीक है, ओके। सो प्लीज अपनी ये जो डॉक्टर लारा है, आप भी काइंडली इस प्रेजेंटेशन को आप शेयर कर लें अपने कोलीग्स के साथ, ठीक है जी, और व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी शेयर कर लें। एंड लेटर ऑन, अभी जो माशाल्लाह से आप लोगों ने जो सब कुछ पढ़ा है, सो लेटर ऑन, ताकि कल परसों आप इसको फिर रिवाइज कर सकें, एंड इट विल अगेन फ्रेशन अप इन योर माइंड, ठीक है जी। तो मेरे इंशाल्लाह ख्याल सर। से डॉक्टर अख्तर, आप जो, जी डॉक्टर लारा, आपका कोई सवाल? I was saying कि first session में तो miss हो गया. If everyone can open their camera, we can have a picture.
हाँ पिक्चर्स ना प्लीज। डॉक्टर सानिया, डॉक्टर सरवर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर जुनैरा। डॉक्टर जुनैरा तो गायब है, इनकी जरा क्लास लें, ये तो सुबह से मैं आवाजें दे रहे हैं Zanera गायब। is not a doctor. She is a coordinator. She is actually an artist. वो हमारे साथ टीम मेंबर हैं जो लाइफ अरे में। सुबह पहले बताना था, मैं सुबह से उनको, मेरा गला जो है वो सूख गया जुनैरा को आवाजें दे देकर। अच्छा वो बेचारी कोऑर्डिनेटर है, मैं समझा जी कि जी पार्टिसिपेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर है। मैंने कहा वो हाँ जी वो कोऑर्डिनेटर। ठीक ठीक चलें सही है। हाँ ना मुझे बता दिया करें ना, ऐसे ना हो कि मैं बेचारे कोऑर्डिनेटर्स को भी मैं तंग कर रहा होता हूँ फिर। चलें हु इज टेकिंग द पिक्चर? डॉक्टर सादिया की अभी थोड़ी सी शक्ल नजर आई है, उन्होंने अब जाके कैमरा ऑन किया है। हाँ जी और आई थिंक Sir, but we all are very passionately listening to you and the strategies which you have given, sir. Thank you very much. It was wonderful, sir. Thank you. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर हदीजा, आप सभी प्लीज कैमरा ऑन कर लें। डॉक्टर खिजर ने कैमरा ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर डॉक्टर खिजर आप आ अक्सर जाए। मेरा ऑन है, मैं नजर नहीं आ रही। नहीं वीडियो में नहीं आ रही, के लिखा हुआ आ रहा है। आ रहा है डॉक्टर साहब। बेहतरीन, आ रहा है, ऑन है अब हुआ है। हाँ जी दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है डॉक्टर खदीजा। ठीक, डॉक्टर शाहीन रह गई हैं। डॉक्टर लारेब आपका बंद हो गया आई थिंक, होपफुली नहीं आपका दूसरा ऑन है, ठीक है। डॉक्टर लारा भी दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है। हाँ बस कर्नल खिजर रह गए हैं और डॉक्टर शाहीन। अब खींच ले से पहले कि फिर किसी का कैमरा बंद हो जाए। डॉक्टर सारे आप उतार लें पीछे। स्माइल एवरीवन। ये असल में आप लोग खुश हो रहे हैं कि आपकी तस्वीर खींच रही है, उसके ये असल में आपकी अटेंडेंस लगा रही हैं। ये हमें पता लग गया था। मेरा बेटा अभी बैठा हुआ था, वो कहता इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा इसलिए कि अभी ये अटेंडेंस हो रही है हमारी, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मुस्कुराइए। So thank you very much everyone. We really enjoyed the session. Thank you. डॉक्टर सारे हो गए? चले। अच्छा ये डॉक्टर अक्सर, फिर आपने नेक्स्ट सेशन भी करना होगा ना, सो आई लीव द सेशन। एडयू लाइफ से जो भी कर रहे हैं उसको होस्ट कर रहे हैं ना, तो उनको कह दे कि आपको फिर को होस्ट बना दें। ठीक है, आपको को होस्ट बना देंगे तो आप फिर ये है कि बाकी सब फिर सो स्वीट ऑफ यू, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह से, आप सबके साथ मुलाकात भी हो गई। थैंक यू सर फॉर द लेक्चर, बहुत अच्छा समझाया। वो ना सब हिल रहे थे, बहुत ब्लर आई है। और मुझे भी अगर ग्रुप में ऐड कर दें, पूछ लें पहले, सर से पूछ लें, जुनैद साहब से उनसे पूछ लें, तो ये कि मैं भी फिर इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कोई भी क्वेरी। ठीक है एवरीवन, देयर इज वन रीटेक प्लीज, सॉरी अगेन। 1 2 3। डॉक्टर सारिया हो जाए तो बता दीजिएगा। मैंने कहा है। चलिए आप सब काइंडली स्टे कनेक्टेड इफ यू हैव नो इश्यूज, ताकि नेक्स्ट सेशन में आपको और सिर्फ अपने कैमरास माइक्रोफोन्स ऑन करने। ठीक है, म्यूटेड है, म्यूट हो जाएगा, वेट करना। Colonel Khizr is back. Washroom break. चलिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। अब छुट्टी करते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं तो पक्की छुट्टी करता हूँ, आप लोगों ने फिर 4:30 बजे आना है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज। एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you very much, ma'am. And thank you very much, Colonel Nadeem also. Thank you, sir. Thank you. सर आप ऑफिस में बैठ के ले रहे हैं सेशन अभी तक? लग तो ऐसे रहा है। The Google Meet link, and that didn't work, so apologies that I'm late.
I think I'm starting to see people come through. Dr. Shafiq, let me know when you want me to start. I don't know if we're waiting, how many people we're... Okay, so we have 15 participants and you are the speaker. So you can start whenever you can. We have the full quorum. We're all here. Great. Thank you very much. So let's see if I can get this to share. Hopefully I can. Can you see me? Yes. Will you be needing hosting rights or co-hosting? Yes. Yes, please. I'd like to be able to share my PowerPoint, if that's okay. I just made you the host. So Great. you can share and make Yeah, breakout share rooms, screen. whichever you need. Yeah, absolutely. Great. Thank you. So Microsoft PowerPoint. Share. And then slideshow, play from start. Right. Let me know if you can see that. We can see that. I hope everyone else can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, sir. Perfect. Great. Well, good afternoon, everyone. I'm sorry again for starting a few minutes late. Thank you for bearing with me while we came on to Zoom. I don't know if some of you may have met me when I had the privilege of coming to Pakistan in the summer with Professor Janet Grant. Yes, we met you. Some of you. Yes, sir. Good. Well, there we go. So now I'm somewhere much colder. You can see I'm wrapped up in my fleece right now, and I'm talking to you from just outside of London. So it is really good to see some of you again and to be talking to you as part of the EduLife programme. I remember being at its inauguration back in the summer. So it really is an honour for me to be talking to you today. So thank you for inviting me. And I hope this session is useful and beneficial for all of you. Just before we kick off, I suppose, what I was asked to talk about was simulated patients. I wasn't really given any other information other than the kind of the topic of simulated patients. And simulated patients is obviously very broad. So I've kind of had to go away and decide myself what I thought would be useful for you. I'm also hoping that this session will be quite interactive. It would be nice if people could speak, and when they're speaking, if you can turn your cameras on so I can see you, because it's nice for me to be able to put a face to a voice. So hopefully it'll be interactive. If you've got any questions as we go through, just raise your hand virtually or just shout at me. I don't mind, and we'll stop and we'll try and answer whatever the question is. So just about me, first of all, just so you know who's talking to you, and I'm not just a kind of a voice and a face. I'm Luke, consultant psychiatrist, Surgeon Commander in the Royal Navy in the UK, consultant psychiatrist and clinical lead down for the Southwest Military Mental Health Team. Why did I come, I suppose, to Pakistan with Professor Grant, and why am I talking to you today? Well, I suppose in my postgraduate education, I've done quite a lot of work with the Royal College of Psychiatrists. And towards the end of this presentation, we're going to look really at a case study of how the college has used simulated patients in an online environment secondary to the pandemic. And I built up quite a lot of knowledge that I didn't have about examining the structures, thinking about simulated patients kind of during that process. So I suppose that's why I'm talking to you about it now. Objectives really for today are twofold. The first is to understand the research base, and the second is to think about how we can practically use simulated patients in the delivery of medical education. Now, I'm using two papers, which I reference throughout this, kind of as my base documents, and I'm giving a fairly superficial overview of the two papers, going to go more into kind of my practical experience of simulated patients, and then, as I say, towards the end, going into the case study. Is someone asking me something, or was that someone's mic just not on mute? I'm sorry, Dr. Luke, the mic was on. I'm sorry. Oh, don't worry.
Don't worry, no, don't apologise. I just wanted to check I wasn't missing a question. That was all. So we'll then move towards its practical use towards the end. So this quote here, I think, is something that we need to think about actually when we think about, simulated patients, because this was the view of William Osler. Now, William Osler was one of the founders of one of the big medical schools in the United States. And in 1905, he said the following: "For the junior student in medicine and surgery, it is a safe rule to have no teaching without a patient for a text. And the best teaching is that taught by the patient himself." And I think all of us here would agree that there is absolutely no substitute for seeing patients with real pathology, with real experience, and understanding the disease by actually seeing it, and understanding the impact that has on the person and how best to manage the disease and the person themselves in a holistic fashion. And that's been known about, as you can see, for 120 years, even before then. And I think we have to remember that when we're thinking about simulated patients and their introduction into medical education, probably from like the 1960s onwards. Now, there are lots of different terms that are used to describe simulated patients when you look at the literature. And sometimes they're used interchangeably, and sometimes they're not. And that can be confusing, I think. The bottom two, pseudo patients and surrogate patients, I don't like those terms at all. I put them there because they can be used and are used in some of the papers. The top two, I think, are the ones that people use most often. And as I say, sometimes interchangeably and sometimes not. So here what I've put is how some people view them as being different. So the idea that a simulated patient is someone that presents signs and symptoms of an actual patient, but there may be some variation. So what does that mean? Well, let's take, for example, a heart attack. The simulated patient might have a very similar history: chest pain that started 2 hours ago, central crushing, radiating down the left arm, feeling sick. So the core features of that are the same. But actually, if you're then going into, well, who do you live with? Where did you go to school? How old are you? Those might be different depending upon who the simulated patient is in that setting. So it's not all the same, but the core features would be. And that's how some people describe simulated patients and use that term. The term standardized patient, if it's not just being used interchangeably with simulated patient, more means a consistent presentation to all. And we'll talk about that a little bit later when we think about kind of examining and how we use simulated patients in formative assessments. But this is now where everything is the same. The core features of the pathology or what's going on, plus all of the stuff around it, all of the stuff that the student or doctor that's in this setting will need to get from the patient. So that is the difference between simulated and standardized, but you do have to be cautious. They are used interchangeably as well. Now, Barrows did quite a lot of work on the use of simulated patients, and this is what his view on them is. And you can see here, this is an example of interchangeably using simulated and standardized. So the simulated standardized patient is a person who has been carefully coached to simulate an actual patient so accurately that the simulation cannot be detected by a skilled clinician. In performing the simulation, the simulated patient presents the gestalt. Now, what gestalt means is the whole being. So the pathology, the biology, the psychology, all of it, the behavior. So the gestalt of the patient being simulated, not just the history, but the body language, physical findings, and the emotional and personality characteristics as well. So essentially, somebody going into that station shouldn't be able to spot the difference between a simulated patient and an actual patient with the actual pathology. So I'm going to give you now just a brief summary how simulated patients are used in the UK, and then I'm going to go over to you because you're going to tell me how you use them in Pakistan, because I have no idea. So I'm looking forward to learning that from you and maybe learning from each other. So in the UK, simulated patients are used across the medical education spectrum, from starting out at medical school all the way through to your final exams and kind of becoming a consultant and finishing training. And then even
as a consultant, potentially in CPD events and things like that, practicing and watching each other. And I remember, I don't know, again, it would be nice to hear your perspectives on this. I remember my first, I don't know, it would have been a couple of weeks at the University of St Andrews, where I did my undergraduate kind of clinical medical training. I remember my very first use of a simulated patient, and it was a communication setting. And I remember skills session, and I remember thinking as a naive 18-year-old at that time, why do I need to do this? Clearly I can communicate, clearly I can say hello and goodbye, and what do I need to sit here for? And I went in very, very what's the word? Probably with a negative attitude, let's put it like that, not really seeing the point. And I remember coming out a changed man. And I remember sitting there in that session, it was a couple of hours, and really understanding the benefit of practicing why we do this and why we have communication skills and why we actually have simulated patients, actors, to practice with. So that, and I still remember it. And that was my very first experience of using a simulated patient. And then in the UK, we use them throughout medical school in both examinations and outside of examinations. We use them in foundation training, so just after you qualify, and then in specialist training, as I've said, in study days, professional exams, and CPD. So they are very well used, I think, across most medical schools, if not all medical schools in the UK, and they really are now part of our standard training. I would like to know how many of you have had some experience of using simulated patients, and what experience you've had. Hello. Hello, Luke. In our setting in Pakistan, we normally interact with the real patients. Like in third year MBBS, we start interacting with patients, taking history, knowing their symptoms and things like that. But sometimes we use dummy patients and simulated patients to teach students like some tests, small tests. Like we can ask the simulated patient or a dummy patient to act like this when the student is asking you question, then you have to tell something different, like you have a disease, you have a fever, like this. And but most of the time we teach students on the real patients, majority, like 90%. So we use both in Pakistan. But very much more. Dr. Baker, That was during the COVID, that was Dr. Rana, thank you. Sorry. Dr. Mushtaq. Dr. Baker, during the COVID era, we had to shift to simulated patient because we could not take all our students to work, and the simulated patients, because we did not have a pool and we did not have properly trained patients. So we had very few people who we who were sort of workers in the college, and we trained them to just give histories to the patients or allow just general physical examination, not intimate examination or anything. So generally, as Dr. Salman says, normally there's so much patient load here, especially in the tertiary care hospital, so much patient load that the students normally learn on patients. Exactly. And Dr. Mushtaq, you make a very good point there. And we're going to go on to that, the reasons why the UK and other countries moved on to simulated patients, and that you hit the nail on the head with part of it there. Actually, the availability of patients to see was a factor, absolutely. And as I said at the very start, there is no substitute for the real patient. A simulated patient is a simulated patient. So no, absolutely, we'll talk about that. So no, that's a really good point that you've just raised there. And you've kind of answered this a little bit, Dr. Rana and Dr. Mushtaq, about where you currently use them. So Dr. Rana said 10% is maybe simulated and 90% is on real patients. Dr. Mushtaq, you said maybe changed a bit with the pandemic and just, not having the access, maybe. Dr. Well, I mean, do you? In the final professional exam, in our clinical assessments of the undergraduates, we use simulated patients for history taking session. For history taking or for small tests, like cerebral examination or small tests. We are trying to incorporate simulated and standardized patients. What about in the undergraduate? We personally also appear as simulated patients in exams. Our house officers and PGs, they also, during the assessment, during the exams,
They act as, because we have not had the proper simulated patients, but our workers or even our house officers, we act as a simulated patients for the graduates, undergraduates in assessment and So you also act. teaching and Okay. Yes. Interesting. So Dr. Shade, you guys all act as okay. And how much in your exams or say communication skills training in undergraduate do they have with simulated patients? Not very much by the sounds of it. We use them in history taking portion, which is about like 10% of the assessment of the practical assessment, and we use them for counseling sessions as well. Okay. So it's about 20% of the practical portion. Fine. No, thank you for that. That was really helpful and useful for me to know. And I think this now goes on very much into why has the UK and other countries started to move on to using large numbers of simulated patients? And here's the reasons. And Dr. Mushtaq has kindly given us the second point on here already. So in the UK, there was a significant decrease in availability of patients. There was a big push, and there still is a push for most of our patients, if possible, to be treated in the community setting. And for there is a real push to reduce the average length of stay for patients in hospitals. So we are reducing stays, treating patients more in the community, and reducing the number of inpatient beds. So that reduces the number of real patients that students can have access to. So that was one thing. Second, linked to that, I suppose, is this idea of early clinical practice. So in the olden days, I suppose, people used to do very maybe a little bit like how you do actually in Pakistan for when I came, more kind of year 1 and year 2 being more focused on the theory, kind of the science behind medicine, and then starting to see clinical cases and patients. In the UK, that changed. And as I said, really from the first couple of weeks, I was doing communication skills with a simulated patient. So by introducing it earlier, there was obviously a requirement to have more people for students to have access to and practice with. There's these other two areas at the end which I think are interesting to consider, actually, from a medical education ethics perspective, I suppose. The last one more so, and that idea of trying to protect patients from harm. There are some things that are difficult to do, I think, for the first time. And an example, I think, there is breaking bad news. Telling somebody that a test result has come back and is negative. And I guess the one, easy springs to mind is a cancer diagnosis. That moment for that patient will probably be burned on their mind for the rest of their life. The way it's said, the way it's delivered, and how that session with the doctor is handled can be really important for that person. Doing that for the first time is very scary. I remember doing it for the first time on a real patient talking about things in A&E, and it was very scary. But I had the backing of practicing it a lot on simulated patients and understanding how I would go about doing it, reflecting on how I did it, and trying to make it as patient friendly, I suppose, and patient suitable as possible. So that idea of protecting them from harm and making sure that they get the best care. So I think that's a really important point there, that in my view, there are some bits that we do as doctors that practicing beforehand is possibly a good idea. And the second, the other point there, which I feel a bit sad about, and it's in the research paper, I haven't seen it myself, but it's there, reluctance from patients to contribute to training. Thankfully, I've never really experienced that. And when I've ever, as a student or as a doctor, asked for students to come in or junior doctors to come in, most people are very happy. But there is potentially that sense of people being more selfish, I guess, more, wanting to look after themselves and not wanting the learner to come in. So that's another reason to think about simulated patients. And there are lots of advantages of using them as well as disadvantages. Assessment reliability. And we'll talk about that towards the end, so I'm not going to cover that point now, but there is a big advantage of using them in clinical examination stations, which is why in the UK now most OSCEs, for psychiatry, all of them are done with simulated patients. Availability. Finding patients can be difficult, and securing them and making sure they're not moved and they are having a scan or some other procedure when you go onto the ward and you want to use them.
or what you want to do is look at something that's quite rare, and that pathology might not be available to be seen. So having SP, simulated patients, means you have a ready supply of people that can be used to teach a certain skill that you can access. So availability is important, but to have the availability, you need a big bank of simulated patients, so they come hand in hand, and that's one of the disadvantages that we'll talk about. Variety of clinical cases. Well, the clinical cases are as wide as your imagination, really. You can make them as wacky as you want. And put them out there. And clearly you can't use simulated patients for everything. So for example, inserting a chest drain, clearly that's not going to be done on a simulated patient. So there are some bits clearly you can't, but for a lot of what we do, you can. And I always remember people saying 95% of the diagnosis is history, 5% is clinical examination. So there are big chunks of really everything that we do that can be simulated. Predictable. Patients that are unwell are unpredictable, aren't they? Not through their own fault, but because of what they're going through. Whereas a simulated patient, should be stable throughout the interaction that you're having in that learning environment. We've talked about using practice scenarios when using a real patient might not be appropriate. So learning how to break bad news, for example. Safe environment, and I think that's key, actually. And using simulated patients is really safe. And I wonder, has anyone ever used the technique of a stop button, whether it's a real big red button in the room or a kind of a virtual stop? Has anyone heard of that or used that with simulated patients? Silence. So one thing I think that you can do with simulated patients that you can do with patients on the ward, but it's harder, is if you're doing something difficult or you're doing something for the first time in a group, you can actually just say stop. And you can stop the scenario and reflect upon what's going on. Ask the group for questions, ask the group for support, ask the group to know what they would do in that situation, or how they should proceed, or what they should do differently, which is difficult to do if you're around the bedside of someone. You may feel a little bit more foolish doing that, or feel that it's not really appropriate to do it with a real patient, but you can do that with a simulated patient. So it really gives that safe environment where you can learn and reflect with each other. Second thing you can do with it is you can record. And when I look back at myself, I don't know if you guys have recorded yourselves with patients before. I obviously it needs have all these mannerisms that I don't know I'm doing. Obviously, and it's good because I can see the mannerisms that I have no idea I'm doing, or see the jars in my communication skills with the patient. But it can be quite difficult actually seeing yourself, and you can be very self-critical, but it's a good way to improve. And then also simulated patients can provide behavioral feedback. Now, feedback from patients, from simulated patients, as a doctor going through training, I always found quite difficult. I used to think, well, are they really in a position to mark me? Are they really in a position to contribute to my exam mark? And on reflection, I think they are, to at least contribute to some parts of it, in terms of how they feel you've bonded, the rapport, the empathy, your communication style, your mannerisms, your body language, the way that you've spoken to them and dealt with them. They're a good person to see that, a good barometer, because you have interacted with them, and they can be trained to do that, whereas a real patient can't. Your simulated patient can be taught how to provide feedback in a structured way that, as medical educationalists, you all know, and that can be shared with the simulated patient to give that feedback to the student or the doctor in training, which is much more tricky for a real patient to do. So I think they're the advantages, and you can see there's quite a lot there actually. There are significant disadvantages though, and again we'll cover some of these as we go through the practical aspects, but cost can be quite a tricky one. Now, simulated patients can be, you can manage simulated patients in two ways. One way is that they're all volunteers and that you have a policy that they're not paid, and you will get people that will sign up on that basis because they're interested in medical education, they want to make a difference, and they will come to your sessions and they let you train you, and they'll be very good. The difficulty, if you don't pay them, is you will probably get less working age people
because obviously they need to often be making a salary for their families. And also there's a risk of paying them too little and not paying them kind of market rate, which can be quite insulting. So cost can be quite tricky, and it can get quite expensive. To make it cheaper though, if you do have volunteers, you can do things like making sure you send them thank you cards, making sure that you talk to them in the breaks, making sure that they feel part of the training program and that they're getting kind of a socialized aspect from it as well. So they're benefiting from the session. So you've got cost to the actually having the SPs, but you then also have the cost of the medical education faculty, because the staff need to maintain a database, need to have a pool. You need to then start thinking about how are you going to develop the simulations themselves and the transcripts. And that all takes an awful lot of time. And I have written a number of scenarios using simulated patients, and I'm always surprised, even though I know how much longer they take me compared to how much time I actually give myself to do them. So that there's a lot of cost in terms of simulation and in the cost of setting it up and maintaining it. So you've got a good database of material. Time. So as well as the development that we've said, which is cost and time, it's the training. Your simulated patient is only as good as the training you give them in many regards. Now, their acting abilities is probably outside the medical schools or the hospital's capability, but the training you give them in terms of how a patient with that condition would be, the training in how to provide good quality structured feedback does take time, and is something that would need to be factored into any big program that was set up. And we've already said they're not real. And, everybody knows going into those situations, they're not real. So it is a bit different to seeing a real patient. It does change the dynamic slightly. Has anyone got any questions before I keep rattling on? Any thoughts, questions at this point? No. Okay, I shall keep going. Now, when you're thinking about different ways to utilize simulated patients, there are, I suppose, 3 ways that you can look at them. One is minimal contact. Now, that is looking at usually kind of pathology. So would be, for example, auscultating the heart. Now, interestingly, you've already told me you've got lots of patients on your wards in Pakistan, so probably you wouldn't need to have simulated patients to allow students to listen to heart, someone's heart sounds. But you might do if you wanted it to be in kind of a very safe, structured environment. You could bring an actor in to do that, but that requires very little training. That requires the actor to be known what's happening and essentially allow their heart to be listened to. You then move on to kind of open scenarios, and the open scenario, I suppose, is a little bit like if you go back to the start, what I talked about, simulated patients versus standardized patients. These really are where your simulated patients go in, and that's where the core features of your station are standardized, but the fillers may relate to the service person, so their age, for example, and their family. And then you have the standardized scenario, which is everything's the same, and that one takes a lot of time for your simulated standardized patient to learn the script, because they have to learn it inside out for it to be standardized, and for you to actually develop that particular package. Now, this is from the research paper around steps engaging with simulated patients. I would add in, though, that there's a step before this, so I think we'll call it step 0. And step 0 is actually recruiting. How do you get a body of actors, people together that you can form kind of a simulated patient cohort group? And there's no real, gold standard way of doing that. Some people have put adverts in things like newspapers or magazines. Some people have gone to religious buildings and advertised there. Some people, it's been word of mouth. Some people put posters up in hospitals. There's a variety of ways, free and at cost, that you can use to get interest to start recruiting a bank of simulated patients.
Clearly, though, not everyone is going to be suitable. So it's a good idea to have some form of interview just to see that they would be appropriate and would be able to work with students or junior doctors. It's about step 2, sharing information with them, because it is a bit of a niche job. Probably people won't have heard about it, so they may not really understand what it is. So giving them some information about what it is that you want, coming to a mutual agreement so they understand what the educational aims are of your program, and then having that trial period just to see how it works for you and for them, to enable you to say yes or no at the end of that, so that you build a set of really good quality simulated patients that people can use. So they're kind of the 5 steps with the recruitment bit at the start that needs to happen to get that bank of people. So what I'm going to move on to now is just think about 3, I think, main areas that simulated patients can be used, and there's work in that, and I'm going to mention some of the studies that have evidenced the suitableness, I suppose, for using simulated patients in these environments. Now, the first thing to say, as we've always said, so I'm not going to labour this again, is that you can make the simulation very real, but ensure it is also safe. We've talked about the feedback, and that's really important for communication skills to understand how you can improve as a doctor, because, you know, none of us are perfect. I have had feedback that I found difficult to hear in the past from simulated patients, things that I may have even disagreed with the feedback from the simulated patient, but on reflection was able to change what I did. And I think it's made me into a better holistic clinician. As I think that feedback is important. And studies have shown that student performance, looking specifically at empathy, was not different between simulated or genuine patients. And I think that's important because some people think that people respond differently to a simulated patient to a real patient, and actually the whole thing is fake. And is it really a good assessment at all of that medical student or junior doctor, because it's not real? Well, for those, you know, from my perspective, I did my final consultant membership exams to the Royal College, as I say, were completely simulated, and you get into a role, and I was bounding between simulated patients. I think there were about 8 to 10 minute stations, and every one of them in my head was real, and real in a real way. I don't think I went round thinking this was all fake, even though, you know, I know it's fake, and objectively I know it's all fake. I was very much in a mode of this is all real and I need to now be doctor and get through this. So that these studies have shown that people engaging with simulated patients show the same levels of empathy between, which shows that I'm not the only one that feels like that. And actually you get quite good buy-in from those that are using simulated patients. Also been seen to look at teaching clinical skills. Now, this was a study that looked at 10 residents, I think they were in the US, looking at their performance in how they dealt with chronic stable conditions with 4 simulated patients versus 4 patients with the chronic condition itself. And what this study found was actually there is no difference between the number of the questions the residents asked, their physical findings, the diagnoses considered, all the investigations proposed. So again, further evidence that actually simulated patients can be used in these educational settings. Monitoring doctors' performance. This is interesting, monitoring doctors' performance. Monitoring doctors' performance can be very difficult, actually. Your bosses can monitor it. You can get patient feedback. You can get colleague feedback. But actually, objectively measuring it can be very tricky. And in Holland, they had simulated patients that went into 49 GP surgeries, so primary care, to simulate having a urinary tract infection. And what they found was that the GPs didn't detect who was the simulated patients at all. Didn't know that it was not real.
And actually, therefore, it was a better way to reflect their actual standard of practice versus maybe a written simulation or some questions or feedback from colleagues, because they can't be spotted. And that's the sign, I think, of a very good simulated patient that has been trained very well. Now, moving on to OSCEs. So OSCE is the way of using kind of clinical exams and using often now, not always. So some OSCEs will have real patients in them, some will have simulated. But when you're structuring an OSCE, you're structuring that clinical exam, clearly, as we all know, it has to be a valid exam and it has to be a reliable exam. And looking at validity and reliability from a simulated patient perspective, what we find from validity is that the simulated patients are often undetectable, making it valid. But we also find it reliable because studies have shown that there's a high intra and inter performance. Now, what that means is that there's a high level of similarity between the simulated patients seeing students or junior doctors within the same cycle of their exam. And we'll talk about in a moment how OSCEs, my experience of OSCEs, but essentially the simulated patient is doing the same thing throughout that cycle of exam. But also we see interperformance. So you see reliability between different simulated patients across different settings or across different days in that particular scenario, in that particular exam. So we know that there is validity and reliability of using simulated patients in exam settings. Now, what are the advantages of using simulated patients in exams? Well, close to reality, not exactly the same. And, an example of that, in a mental health setting would be the idea of a thought disorder in someone, for example, with schizophrenia. Yes, someone can act that particular role, but it's not going to be quite right. I mean, it will be a bit stilted. So there are some things I think are difficult to do simulated, but there are other things, say having an angry patient, for example, who wants to make a complaint, that can be quite close, very, very close to reality. We've talked already about simulated patients providing controlled and safe environments. Well, again, it's controlled and safe in an OSCE. You can get feedback from the simulators as part of the exam mark. So in the Royal College of Psychiatrists, that mark is considered. In some medical schools, part of the overall exam mark, usually not a huge number, not a massive percentage, but at least some of the percentage will be given by the simulated patient, as I've said, around often the empathy and the communication skills. We talked about availability already. You can tailor your stations. As we said, your imagination really is the limit. Distressing scenarios can be simulated. So, for example, pediatric stations, which would be not really possible with a real patient for some scenarios, you can do, knowing that it's safe and not causing harm to anybody. And the patient variable is uniform. The patients will follow a script and will respond in certain ways. And that is uniform across every student, junior doctor that is sitting at exam, or should be at least. Disadvantages, and there are quite a few here. So textbook scenarios are not always real life. We've said that, really not always. We've talked about the costs because, again, for these exams, if you are putting in loads of simulated patients, they probably will need money. They'll probably need expenses. They'll probably need their lunch, all of those things. And that can therefore be quite expensive. There can be training issues, making sure that your whole bank of simulated patients is trained up to the right level and standard. And as we said a moment ago, the assessment of complex skills. So, for example, thought disorder in mental health disorders can be quite challenging to simulate and do in an OSCE scenario. Now, I'm aware of time, and I do want to show you a video. So I'm sorry if I've rattled through that fairly quickly. But what I want to do now is move on to looking kind of at a practical change, kind of a case study, if you will, on what happened using simulated patients at the Royal College of Psychiatry secondary to the pandemic. Now, previously to the pandemic, we've always used simulated patients for a long time.
that was always face-to-face. That was always in a building. So when I did mine, it was in a building and you went around the stations, could see it. But in the pandemic, I was very much involved in looking to see how could we still do clinical exams, but online, so that people could still progress through their training, could still, get their membership without there being delays, because who knew how long the pandemic was going to last. And what we have shown now is that actually you can use simulated patients and have clinical exams online very successfully. And that's how we've delivered this exam now for a couple of years. And clearly there are difficulties bringing things online. So for example, doing clinical skills, how do you do that? You can't listen to someone's heart. You can't do those bits. So there are significant limitations, but there are some things that can be done in an online environment with simulated patients. The other thing to think about with online, and I bring up online deliberately because obviously that's how the world is going now. Much more stuff is delivered online and people quite like it. They don't have to travel, do it from their own home. You can see here that 99% of people completed their exams doing it online. And I think that is a great number, which shows that the technology now is good and good enough that you can deliver exams in that way. So this is how we run exams in the UK using simulated patients, and that is an online timetable there. And you can see that to do things online can be quite challenging. It takes a lot of time to do the kind of the bits at the start. And then you can see a very long period in the day, 9:50 to 12:35, of just being bounced around different stations with a break. So I hope that's useful for you to see. I mean, I'm not saying that you now, as we come out the pandemic, need to think about online delivery of exams, because they're certainly complex. And I think there are also significant limitations to them, but they can be used in certain environments. And we have done it successfully at the Royal College. Now, this is when I embarrass myself and show you the use of a simulated patient and how we use them in exam settings in the UK. So I'm going to play this video for you because hopefully it will just give you a kind of a picture of what I've been talking about and how they're used. So this was a video I recorded from Turkey. I was on holiday and we were just developing these online exams, and we realized that the people sitting them would want a video or something to see what they were going to experience. Nobody had seen this software before. Nobody knew what was going to happen. So I recorded this mock exam station with the college so that people could see what was going to happen. So hopefully what I'm going to do is I'm going to play it and then we'll have a discussion towards the end. So what you'll see here is me as the student or junior doctor. You'll see person next to me is the examiner for this station. Person next to him, that gentleman, he is the patient. And the person next to him is the invigilator. So that's the row of people. I'll play it. Hope to let me know when I hit play if you can hear it. What I want you to do, I guess, as you listen to this, and this is what I'd like the discussion to be, is around what do you think, having watched this, is positive from a medical educational perspective using a simulated patient, where clearly he doesn't have the problems that I'm going to discuss with him, versus doing this with a real patient. So just have a think about and how I might be feeling as the student in this and how I might be responding to it, and whether you think this is a valid and reliable way to conduct an exam as well, because that's obviously really important for this kind of thing. So I'm going to hit play. I'm going to embarrass myself. Don't judge me, please. Let me know if you can hear it. Station 1, I need to wait for approval. Can you hear it? To confirm we can start. Please wait. Just before I hit play again, can you confirm you can hear it? Yes, we can hear. Great. We can't hear it. We are here. I can hear it. Now. Approval that We everyone could is hear connected it to the station. now. 1 minute, 30 seconds to read the station instructions.
You may begin reading now. So there you can see the very brief instructions to the candidate, and they're given a set number of time to read that and think about it. Please stop reading. You now have 7 minutes to complete the task. I will tell you when you have 1 minute remaining. You may begin the consultation. Hello, good morning. Is that Mr. Gold? Yeah, it is, yeah. Hello, good morning, sir. My name is Dr. Luke Baker. I'm one of the doctors that works in the team here. It's really nice to meet you. I've just seen the referral that your GP sent us through, and I understand that you're here to talk about your alcohol consumption today. Is that correct? Yeah, it is, yeah. Great. Okay, so well, thank you very much for coming in. I know it can be hard sometimes to come through to see a doctor to discuss things like this. So thank you for being here. What I thought I'd like to do just for the next kind of few minutes is to take a history of you about your alcohol, and then move on at the end to think about how we can help. How does that sound? Yeah, that sounds good. Great. Well, thanks, sir. So maybe I could ask you first of all, if you could describe a typical day for you and how much alcohol you drink kind of in that day. Well, my wife says I drink too much. Okay. So. Fine. And tell me, on a typical day, when do you start drinking, and how does your drinking kind of develop over the course of the day? Well, pretty much as soon as I wake up, I have a drink. I'd have like 2 large vodkas, and then at lunchtime I'll go to the pub for lunch. I'll have 3 double vodkas. Okay. And then after work, before I go home, when I'm waiting for the train, I'll go in the pub again, and I'll have like 2 to 4 pints of lager. And then once I'm home, I'll have depending on what's in the house, I'll have another 2 to 4 bowls of beer or cans of lager. And then I'll have 2 large vodkas as well. Okay, sir. Thanks for sharing that. So it sounds like maybe around kind of a normal size bottle of vodka a day. Does that sound about right? Yeah, that sounds about right, yeah. And then somewhere between maybe 4 to 8 beers as well in the day. Yeah. Okay. Yeah. Do you drink anything else on top of that? Do you ever add in any wines or other spirits at all? No, that's no. And is that a fairly consistent pattern for weekends as well, or do you ever drink more than that? No, just the same every day. Okay. I noticed that sometimes there's like blood in my poo, really. Okay. And in my vomit, and then I noticed that I'm getting like a pain in my abdomen, in the right side of my abdomen. Oh. Okay. I'm getting palpitations as well. My heart races, and I'm getting, like palpitations. Okay, I'm really sorry to hear that. That sounds quite scary as well in some ways. Would it? Yeah, it's worrying. Yeah. Would it be okay if I examine you after this, if that's all right, just so I can maybe try and work out what's going on? Would that be all right? Yeah. Okay. Yeah. Great. No, thank you for sharing that. And so, may I ask about your mental health as well, if that's okay? How's your mood been recently? Yeah, I think I've been a bit more down, really. Yeah, a bit more low. Okay. And anxious? I think you said earlier that you'd been a bit anxious. Yeah. And does the alcohol help both of those, do you think? Is that? The alcohol helps with the anxiety, yeah, definitely. But it's just where I just feel a bit tired, really. I mean, energy levels ain't it's not like, just I just feel a bit more tired. Yeah, no, I understand. Okay. And in terms of what's going on at home and kind of in your work, you've told me kind of 2 things. You've said that your wife has threatened to leave you if you don't get help, and I'm really sorry to hear that. So I'm really keen to help, and you've definitely come to the right place. And you've also told me about your 1 minute remaining. So maybe you could tell me a bit about what your wife has noticed and what issues your wife is experiencing, and maybe why she's threatening to leave. Well, like I said, she just said she thinks I'm drinking too much and need to get on top of that, really. And also, like I'm sleeping in the spare room, really. Okay. Why is that? What happened? Well, just where, like I said, I've noticed blood in the poo, and sometimes I've woken up
in well, pool of vomit really. Oh, okay. And then also because we're just not really getting on, so I sleep in the spare room. No, so that sounds really difficult. Said, yeah, okay, fine. And then work. What's happening there? Just at work, the same thing really. They, where I'm getting my concentration's not so good. I'm made a few mistakes at work. So they're also saying, that is the end of the consultation. Thank you so much for talking to me, Mr. Gold, today. I really appreciate it. No problem. You can now click next to move to your next station. Remember to click connect when you get there. So there we go. We don't want to hear that again. So that is a video that's on YouTube that shows the use of simulated patients in an online exam setting that I recorded a couple of years ago. I'm aware of time, which is why I whizzed through bits of it. I didn't think you need to see all of it. I'm just wondering what you thought of that, about using kind of things like that in professional exams. What was your sense of it? Did you think it was a load of rubbish and actually it's all stupid and, that there's no reason to do that and we should all just be doing it on the wards with real people? Did you get a sense there was good bits and bad bits? Do you think it was all good? And I'm not talking about the quality of my history taking. I'm talking about the use of a simulated patient in that setting. So testing a junior doctor or student on how to take an alcohol history, which is what that one was. Silence. Okay, let me try another question then. Any thoughts about using simulated patients for online exams? Do extra considerations need to be made if you're using simulated patients or using education? In my opinion, using simulated patients in professional exams, sometimes they answer in such a way that it confuses the student more, in my opinion. If they forget the answers we have already taught them, that you have to answer the student like this. So if they answer something else, the student is confused and dragged from the track, from the Viva, if we are taking Viva or clinical exam. That's my opinion. It is good thing, but in professional exam, this is one drawback I felt. No, Dr. Rana, I think that's very good point, and I think that goes back to the importance of the training and making sure that the simulated patients have that training, they understand what they're saying, and that period of time where they're working with you. Exactly. And if they can't remember the lines and they're not actually a very good simulated patient, then it's that trial period where you can say to that simulated patient, unfortunately, this isn't working for us, and end kind of that relationship with that simulated patient. But a very, very good point. It can be very confusing if they say the wrong thing. Yes, exactly. I've seen it. Yeah, absolutely, and I've seen it too, Dr. Reiner. It's very annoying when it happens because you, as the medical educational professional, there, you've done so much to get it right, and then the actor gets it wrong. But there we go. It's the risk. Dr. Mufti, hello. Hello, Luke. How are you? I'm very well. How are you? Nice to see you. We met each other in last summers while you were in Pakistan, especially in Lahore. I remember. I recognize lots of faces here now, actually, which is nice. Thank you very much. The pertinent question which I have in my mind, well, using this technology is a good thing, but we can't think the technology is being used in the first world countries and in the third world countries. Your patients are very well acquainted with this type of conversation while online. Our patients are not that much well conversant with this type of history taking and a medical examination. How should we tackle this problem of our patients who are not well conversant with this type of a doctor's attitude? A doctor is sitting miles away and the patient is sitting in front of just a mic and a video camera, and he's reluctant to tell so many things which he is
and at times he or she is having a lot of apprehension to probably someone else is also listening in the way, and he or she doesn't want to disclose everything which he would she would like to disclose to the doctor in a private room. So we must think about regarding, particularly while keeping in mind the third world countries, how to tackle this problem. Of course, it's one of my own country belongs to a third world country. We are trying our level best, but it will take certain time to reach that much limit. And that similarly, our students are also at times reluctant to go through this professional type of examination while using this technology, and they get confused also. They are having a lot of apprehensions and fears. Probably I have been connected or not connected. I have been able to convey my answer to the examiner or not properly. Once you are one-to-one sitting face to face, the examiner and the student, they feel both are at ease. They can feel have the expressions of the examiner, my answer is correct or whether my answer is wrong. So these are the few points which came into my mind. I would like, and that's why I asked you regarding third world countries. It's our own problem. We have to calculate, but what about the other problems? Thank you very much, Dr. Luke. I'm really obliged. No, Dr. Mufti, what wonderful questions. What wonderful questions. Not easy to answer though, are they really? I think in regards to technology and regards to using online, I think that's a small bit of what I've been trying to get across today. I think I wanted to give you this example because I think there may be things to think about as you're using, now in your medical school around EduLife and kind of the online platforms and programs. The world is moving that way, and I think there can be a platform for it. But you make an absolutely valid point that technology usage is different in our countries, and maybe people's confidence and belief in using that technology to share things is also going to be influenced by that. So absolutely very, very valid points. And it may be that the online part of using simulated patients isn't yet appropriate for Pakistan in all environments. I guess that what I would say though, I suppose if we're using simulated patients in an online environment, they can be trained to use it, I suppose, and they can be made to feel more comfortable using the platform, Zoom, the software, to do that more so than perhaps a real patient. So I hear you, but I equally think you possibly could train it. So I think that was one bit around just maybe the difference uptake. Dr. Mufti, what was your other? You said two. What was the other point? Dr. Luke, I think so that the simulated patients for assessment for the undergraduates examination is very good because it is very standardized. We are using the history station and the counseling station for examination for the last 2 to 3 years. And it's very standardized for every undergrad. Because the patient, when we do the assessment with a practical actual patient, then the patient moved for the first candidate, and then after 5th candidate and 6th candidate varies. When the first candidate asks about the history to that patient mood is fine, he's fresh. But after every consecutive, the patient mood and patient will not answer properly to the questions to the candidate. For assessment, the simulated patient is very, very good in the history taking and counseling because we are practicing for the last 2 to 3 years, and it's very standardized, and the students' feedback is very good about it. We have not practiced the online, but online we have not practiced, but in real, the SPs for the history and counseling is very good for the students, and the student feedback is also very good for it. No, good. And I think that's what the evidence base says. I think that's what we've found where I am. It's certainly how I found it personally. The online bit may be something for you to try at some point just to see how people find that and experience that. I don't know. Something you could try. It's easy to set up. As you've kind of done for this webinar on Zoom, can be done quite quickly. You could get people, to be able to watch what's going on as well. So lots of students, one actor, one person doing it, someone from the medical school watching and giving feedback. So it's something maybe you could consider, and it might make the availability of simulated patients easier. If they could do it from wherever they are and not have to travel.
And as you know, using Zoom is free, isn't it? And of course, the other thing that we haven't used today in this webinar, because I wasn't sure what software we were using, you've got breakout rooms and things, haven't you, that you can use, which again can be really helpful, I think, from a teaching perspective about getting them to reflect quite quickly on what's happening and then bring them back. There's lots of ways you can use the technology, I think, to make this more useful. But I hear that technology, you know, use in different places is different. I'm aware of time. We are 10 minutes over, and I'm sorry for that. That's partly my fault because I was, as I say, on the Google Meet, not Zoom. Are there any final questions or thoughts? Okay. I'm very happy, you know, for anyone to contact me about the use of simulated patients. Happy for you to ask me anything. My Twitter handle is there. I know lots of you have got it already, but I'm very happy for you to ask me any questions about the use of simulated patients and how best they can be used. Really good seeing you all again. It really is lovely seeing lots of, as I say, actually, when I'm looking at your photos now and seeing some of you that have turned your cameras on, I do recognize quite a few of you actually. So it is nice to see you all again. Hopefully I'll see you again at some point soon. Have a good start to the year. Happy New Year to you all. And thank you for joining and thank you for listening. Thank you so much, Luke. Thank you very much, Can Dr. I Leo. picture with you though first before you leave? Pardon me, Dr. Shafiq? What? Sorry, Yeah, could a you- screenshot. Can we have I a didn't picture hear what with you you? said. Oh, can you have a picture? Of course you can have a Yeah. picture. There's sun. Let me move though. If you want a picture, because there's lots of sun behind me, which is. Yeah. Let me try here. Well, the sun will still be behind me. Let me completely move. I think that's better, isn't it? Dr. Luke, very bright sunshine is there, I suppose. Now I it's know better. it is Very bright, bright isn't it? sunshine, Dr. Luke. There is lots of sunshine, but I tell you, it's 0 degrees. So it might look nice, but it's freezing. Absolutely freezing. How hot is it with you? What's the temperature? Make me jealous. It's just 8, 9, 10, 12. Oh, well, that's cold, isn't it, for you guys, I guess? I remember in the summer, it was about 30 or 40. It was very hot. But no, it's Yeah. 0 degrees here. Ice and snow. Well, ice on the roads this morning. So very cold. Yeah. Anyway, how are we for the photo? Just 1 second. Just keep smiling. And let me check. Have you stopped sharing your screen? Stop sharing it. Yes, because that just take a lot of space. Yeah. Now, Dr. Saria, can you take a picture? On it. It's very good that after such a long session, still we are smiling. Dr. Aksad, is it over? Yes, Dr. Saria will let us know. Dr. Saria, done? Okay. Everything is fair in love and war. So this is your love, I guess. No, thank you, guys. Thank you. Do send me the picture. Yes. Have a lovely evening. You too. Take care. See you again soon, I hope. Bye for now. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you, Dr. Luke. Goodbye. Thank you, Dr. Aksa. Thanks to everyone, and inshallah we